पिंपल आ गया तो इंटरनेट पर आपको 100 डिफरेंट हैक्स मिलेंगे। टूथपेस्ट, लेमन, आइस, स्क्रैबिंग, फेस वॉश अगेन एंड अगेन। बट प्रॉब्लम यह है कि हर पिंपल के लिए सेम सोल्यूशन काम नहीं करता। सो टुडे लेट्स डिवाइड एक्नी ट्रीटमेंट इनटू 3 मेथड्स: स्लो मेथड, ओवरनाइट मेथड एंड लॉन्ग टर्म मेथड। और मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं, इनके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और किस सिचुएशन में कौन सा मेथड बेटर है। मेथड 1, दे स्लो मेथड। सबसे पहले है द स्लो मेथड। इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक मेथड है। एक्चुअली एक्नी ट्रीटमेंट का मोस्ट रिलायबल पार्ट ही कंसिस्टेंसी है। आप एक जेंटल क्लींजर यूज करो, स्किन को ओवर वॉश मत करो, नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज करो और डे टाइम में सनस्क्रीन। उसके बाद एक्नी के टाइप के अकॉर्डिंग एक प्रूवन एक्टिव इंग्रेडिएंट चूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलिसिलिक एसिड पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बट हियर्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, डोंट यूज एवरीथिंग टुगेदर जस्ट बिकॉज यू वांट फास्टर रिजल्ट्स। आपको लग सकता है कि अगर सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, रेटिनॉल स्क्रब और 5 डिफरेंट सीरम्स एक साथ यूज करेंगे तो अक्ने जल्दी चला जाएगा। बट इरिटेशन हो सकती है, स्किन ड्राई, रेड और सेंसिटिव हो सकती है और इरिटेटेड स्किन एक्नी को और डिफिकल्ट बना सकती है। Dermatologists generally recommend giving an acne treatment several weeks to work. With effective treatment, fewer breakouts may appear in around 4 to 8 weeks, while clearer skin can take several months. So, the biggest pro of the slow method, it's focused on actually controlling acne, not just hiding one pimple. The con, it requires patience. आपको कल मॉर्निंग परफेक्ट स्किन नहीं मिलेगी। Method 2, the overnight method. Now let's talk about the method everyone wants. मुझे पिंपल है और कल इंपॉर्टेंट इवेंट है, रात तक क्या करूं? First, let's clear something up. There is no scientifically proven skincare trick that can completely erase every pimple overnight, but you can make an angry pimple look and feel calmer by morning. First rule, don't pop it. Seriously, आपको लगता है कि पिंपल पॉप करने से प्रॉब्लम खत्म हो गई, but squeezing can increase inflammation and increase the risk of marks and scars. Instead, keep the area clean and avoid touching it. For some pimples, an appropriate acne treatment containing ingredients such as benzoyl peroxide can help reduce inflammation and acne-causing bacteria. And if the problem is swelling or discomfort, a cold compress wrapped in a clean cloth can temporarily make the area feel calmer. Then leave your skin alone. No lemon, no toothpaste, no baking soda, no aggressive scrubbing. Toothpaste especially sounds like a classic internet hack, but dermatologists don't recommend it for acne because its ingredients can irritate the skin rather than properly treat acne. The biggest pro of the overnight method? It's useful when you need to calm a visible pimple quickly. The biggest con? It doesn't solve the reason you're getting acne, so tomorrow morning that one pimple might look better. But if your acne keeps coming back, you need method number 3. Method 3, the long-term method? This is the method people usually ignore because they don't ask, why did this pimple come? They only ask, how do I remove it? Imagine you're playing a video game. Every time a pimple appears, you're fighting the enemy. But long-term treatment means finding where the enemies are coming from. Maybe your skin is getting clogged. Maybe you're constantly touching your face. Maybe you're using products that don't suit your skin. Maybe you're irritating your skin with too many active ingredients. Maybe your acne is hormonal. Or maybe what looks like acne isn't actually acne. That's why recurring or stubborn acne can sometimes need a dermatologist to identify the real cause. Long-term treatment usually means keeping a simple routine and consistently using an acne treatment that suits your skin. For example, retinoids such as adapalene can help unclog pores and prevent new breakouts. Salicylic acid can help unclog pores. Benzoyl peroxide can help reduce acne-causing bacteria and inflammation. And once acne is under control, maintenance matters. Because clear skin isn't just about removing today's pimple. It's about reducing the chances of tomorrow's breakout. The biggest pro? You're treating the problem, not just the symptom. The con? It takes time and consistency. And sometimes even the perfect routine isn't enough.